Congress President Sonia Gandhi and Party Vice President Rahul Gandhi on Monday flagged off relief material for the victims of Uttarakhand flash floods. The leaders flagged off 24 truckloads of relief supplies in addition to 125 trucks already sent to Dehradun. Party General Secretary Ambika Soni said that the party will ensure all efforts are taken to heal the wounds of the victims. 10-10 लाख रुपया अपने एमपी लैड से सबने अपने डीएम नोडल डीएम को चिट्ठियां भेज दी हैं। अब 125 ट्रक कांग्रेस की हर शाखा ने, यूथ कांग्रेस, सेवादल, महिला कांग्रेस, दिल्ली सरकार, हरियाणा, दिल्ली के कांग्रेस और हरियाणा की कांग्रेस, सबने इकट्ठे करके अभी रवाना किए हैं। और ये सिलसिला सिर्फ एक दिन का नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष चाहती हैं कि जब तक एक एक बंदा जो इस त्रासदी से पीड़ित रहा, उसको अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिलना चाहिए। AICC Treasurer Motilal Vora and AICC General Secretary Ambika Soni had visited Uttarakhand to oversee relief operations and coordinate with state Congress units, which have been sending relief materials. Delhi Chief Minister Sheila Dikshit said all necessary help will be provided to Uttarakhand. हम निरंतर मुख्यमंत्री उत्तराखंड से टच में हैं। जो उनको चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, ऑफिसर्स चाहिए, कुछ भी चाहिए हम करेंगे। Congress has set up a control room at Dehradun to accelerate the relief work. AICC has also deputed its leaders in Dehradun to monitor the relief and rescue work. Sudhakar Das's report, DD News, Delhi.